Thank you, Dr. Sama. Now I would like to call Dr. Hamza Ghafoor. He will present temporary pacemaker insertion. Today we will talk about temporary pacemaker. This is done in patients to generate electrical impulse to the heart, which has not lost ability to generate electrical impulse. So there are three types of temporary pacing which are routinely done. These are transcutaneous pacing, transvenous pacing, and epicardial pacing. So first of all, transcutaneous pacing. It is the most uh, which can be done in less than 1 minute if you are mastered in this. We are not routinely trained in this type of pacing. We have defibrillators which have these settings, which we apply pad and do the settings, and we can pace the patient within 1 minute. So equipment provided, there are pads, the transcutaneous pads are available with the machine, defib machine. ECG electrodes are attached to the patient when there is a need of pacing. You have to make sure that skin is clean and dry. So there are two placements of the pad, anterior posterior, anterior anterior. So these are the labels on the pads which come with the defibrillator machine. And this is the anterior posterior placement of the transcutaneous pacing pads, and this is the anterior placement. So demonstrate, there is a small video so you can be familiar with this pacing. So first of all, this is the patient which needs the transcutaneous pacing. You will attach the chest electrodes of the defibrillator so you can identify the rhythm of the patient. So when you have applied the electrodes, you turn on the monitor, you assess the rhythm, and after that there are the transcutaneous pads which are available with the defibrillator machine. For this type of pacing, you must have to go multiple times. So this is the anterior placement of the transcutaneous pads. On the pads, the position of the pad where to apply is mentioned. So you have applied these pads according to the position label. After placing the lab, you assess the rhythm. There is a pacer mode in the defibrillator. You turn on that pacer mode, and there is, you see, cardiac electric impulse starts appearing, and you increase the current. So this is the pacing which is started in less than 1 minute. So this can save a patient which received an emergency or in cath lab. So you should all be familiar with this type of pacing because this is the pacing which can save the patient life within 1 minute. And for this you have to go through routine practice once in a month and repeat it. The other most commonly we are familiar with transvenous pacing. So transvenous pacing is mostly done through internal jugular vein and transfemoral vein. So we spare the subclavian vein for the permanent pacemaker for the patients who need the permanent pacing. So this should be done preferably under fluoroscopy, but in emergency conditions, you can do this transvenous pacing through internal jugular approach. So you must be all familiar with this, the instrument. This is the pacemaker, temporary pacemaker leads. They are the pacemaker, dual temporary pacemaker and single type temporary pacemaker which are available in our setup and mostly of the setups. So the most important thing in transvenous pacing is that you should put emphasis on sterile conditions. You identify the internal jugular vein and do aseptic technique. You do the transfemoral and internal jugular puncture. After that, the pacing wires, permanent pacing wire are reached to the right ventricle through transvenous and transfemoral approach. So after that, you should be monitoring during the procedure, you should be monitoring the patient rhythm on the monitor. And you should be seeing these complexes. This is the ECG of the patient with temporary pacemakers. So insertion you should, after skewering, you should be skewering the lead
so it should not be moved. The movement of the patient will depend on the limitations. You should be counseling the patient that his movement should be restricted. The other type of temporary pacing is temporary epicardial pacing, which is done in patients mostly in post-cardiac surgery patients. So during cardiac surgery procedure, these leads are placed in the right ventricle or right atrial. In the need of time, when there is a need of pacing, pacer box is applied to this lead, and the epicardial pacing is done. After that, the most important thing is the TPM care of the patient. So after, you should be assessing the patient rhythm, heart rhythm. You should be do the ECG, 12-beat ECG, and assess there is adequate pacing and there is monitoring the vital signs of the patient, and you should be inspecting the proper functioning of the pacemaker. So you should secure the generator box to the patient, check the pacing threshold every 12 hours, replace the battery generator. This is the most common mistake which is routinely done, which is identified, has been identified in many setups, that most of the time battery is not working. So replace the battery generator most suitably every 48 hours. And there is due to this, there is failure to capture and patient may go through asystole. So you maintain the electrical safety and monitor the insertion site. This is the second most, you should be looking after the patient for any infection at the procedure site and assessing change the dressing after 48 hours. Assess patient safety and comfort. So after you have done the pacing, the patient is in anxious state. He doesn't know कि मेरे साथ हुआ क्या है. तो उसके बाद आपने सर्जरी करने के बाद उसके पेशेंट को बताना है कि ये आपको वक्ती तौर पे सारा कुछ किया गया है, आपको ज़रूरत पड़ने पे ही हटा दिया जाएगा. इससे पेशेंट का जो एंग्जाइटी लेवल है बहुत रिड्यूस हो जाएगा. तो आपने पेशेंट के साथ पेन होगा उसको रिलीव करने के लिए सेडेशंस दें. In the end, it only takes 3 minutes to no cardiac output to start losing brain cells. Knowing what you can do will make all the difference to the patient's futures. Thank you. Thank you, Dr. Hamza. Now, this is the last presentation of this session. I would like to call Mr. Imran Ali from NICVD. He will present crash cart and emergency kit. Assalamu alaikum and good evening everyone. I am Imran Ali Channa. Currently I am working in NICVD Hospital Karachi in cath lab. It's a great honor for me in front of you and get a chance to present this presentation. My presentation are mostly using trolley and catheter in cath lab. My objectives are crash cart and emergency kit, snares, coils, covered stent and thrombusters. क्रैश कार्ड को आप इमरजेंसी और डिफरेंट वार्ड के अंदर देख रहे होते हैं. क्रैश कार्ड इन्वेंटेड बाय जोएल जे नोबल in 1962 in Bethany Medical Center, Kansas City, USA. A crash card is a special cart with drawers containing emergency drugs and all life-saving equipments in case of any crash condition or patient going to cardiac pulmonary arrest. Functions of crash cart. It's provide mobile station with the hospital premises that containing everything needed to treat life-threatening situation. The advantage of mobility to allow treatment to come to the patient when needed. क्रैश कार्ड का फंक्शन ये है कि अगर आप वार्ड में आपके पास 15 से 20 पेशेंट हैं या आप प्राइवेट वार्ड के अंदर हैं तो उसमें रूम्स के अंदर पेशेंट है, वहाँ पे पेशेंट अगर कोई क्रैश कर जाता है तो क्रैश कार्ड को आप पूरा जो आपके पास फुली इक्विप्ड है मेडिसिन और इक्विपमेंट्स के साथ आपको लेके पेशेंट के पास जा सकते हैं और पेशेंट को उसी बेड के ऊपर वो सारी लाइफ सेविंग इमरजेंसी मेडिकेशंस दी जा सकती हैं जिससे पेशेंट की लाइफ बचाई जा सकती है.
क्रैश कार्ड के दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट, दूसरा इंटरनल कॉन्टैक्ट। एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट में हमारे डिफिब्रिलेटर विद जेल, अल्ट्रासाउंड जेल फॉर डीसी शॉक, एम्बो बैग विद मास्क, स्टेथोस्कोप, पोर्टेबल सक्शन मशीन, शार्प कंटेनर, IV स्टैंड, एमरजेंसी कार चेकलिस्ट, एमरजेंसी ड्रग इंफॉर्मेशन शीट, हार्डबोर्ड फॉर CPR और ऑक्सीजन सिलेंडर। इंटरनल कॉन्टैक्ट के अंदर फर्स्ट ड्राज के अंदर हमारे पास मेडिसिन आती है, जिसमें हमारी सारी एंटी एरिथमिक ड्रग्स, आइनोट्रॉप्स, वेजोडाइलेटर्स, डायूरेटिक्स और अदर मेडिसिन होती हैं। मिसलियंस में हमारे पास IV कैनुलाइजेशन, डिस्पोजेबल सिरिंज, IV सेट्स और रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स में हम बात करें, हमारे पास ETT ट्यूब्स, एयरवे, LMA और कार्डियक चेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करें, जिसमें हमारे पास TCP पैड्स, ECG इलेक्ट्रोड्स, एंड फिफ्थ ड्राज के अंदर IV फ्लूइड्स और स्पेशल प्रोसीजर ट्रे। स्पेशल प्रोसीजर ट्रेज में पेशेंट को कैथेटराइज करना है या एक्सटर्नल CVP लाइन पास करनी है, आर्ट लाइन पास करनी है, वो ट्रेज हमारे पास मौजूद होती हैं। क्रैश कार्ड पॉलिसी, क्रैश कार्ड मस्ट बी चेक बाय हेड नर्स एवरी in shift and document in checklist. Crash card items must be checked monthly for expiry dates. Each unit will have crash card placed in easily placeable location. और क्रैश कार्ड को यूज़ करने के बाद फिर उसको अंडर सुपरविजन लॉक किया जाता है, क्योंकि जो भी मेडिसिन हमने यूज़ की है उसको रिप्लेस करना होता है। Emergency kit. First aid kit or emergency kit is a basic equipment tray or box which contain all emergency equipments and drugs which needed emergency situation for life-saving purpose. Emergency kit को हम जब पेशेंट की शिफ्टिंग कर रहे होते हैं या एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर शिफ्ट कर रहे होते हैं, तब हम इसको पेशेंट के साथ शिफ्ट कर रहे होते हैं। हम NICVD में हमारे चेस्ट पेन यूनिट से जब पेशेंट हम NICVD हॉस्पिटल मूव कर रहे होते हैं, तो emergency kit के साथ पेशेंट को मूव करते हैं। emergency medicines like aspirin, NGCID, pain relievers, local anesthesia and life saving medicines होती हैं। अदर आइटम्स की बात करें तो एम्बो बैग विद मास्क, एयरवेज, स्टरलाइजेज बैंडेजेस, 4x4 इंचेस गाज पीसेस, सीजर्स, लेटेक्स ग्लव्स और एंटीसेप्टिक। उसके बाद कैथेटर्स पे अगर आएँ तो सनेयर कैथेटर, वस्कुलर सनेयर इज एन एंडोवस्कुलर डिवाइस दैट यूज टू रिमूव फॉरेन बॉडी फ्रॉम इनसाइड एंड आर्टरीज एंड वेन्स। हम सनेयर को यूज़ करते हैं जब कोई फॉरेन बॉडी लाइक एज कोरोनरी वायर हमारी ब्रेक हो जाती है ज़्यादातर, या स्टंट हमारा डिस्लॉज हो जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम सनेयर क्या यूज़ करते हैं। सनेयर हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक सिंगल लूप सनेयर, दूसरा ट्रिपल लूप सनेयर। Snare loops are constructed of super elastic nitinol wire providing flexibility to kink resistance. इसके 4 components हैं, एक snare, snare catheter, introducer and torquer. Coils, endovascular coiling, also called endovascular embolization to block blood flow in an aneurysm. An aneurysm is a weakened area in the wall of an artery. हमने क्या करना होता है, जो ब्लड का फ़्लो एन्यूरिज्म की तरफ जा रहा है, तो उस ब्लड का फ़्लो बंद करने के लिए हम कॉइलिंग कर रहे होते हैं। कॉइल्स जो है वो सॉफ्ट प्लाटिनियम मेटल्स की बनी होती हैं, लाइक एज ए स्प्रिंग। वो हम माइक्रो कैथेटर के थ्रू उसको जो है एन्यूरिज्म की टिप पे मुंह पे लेके जाते हैं और उसमें कॉइलिंग हम करते हैं। जब कॉइलिंग कर देते हैं तो उसके अंदर वो एक जो खाली स्पेस था वो फिल हो जाता है, तो ब्लड का फ्लो जाना वहीं बंद हो जाता है, जो कि हमें रप्चरिंग से प्रिवेंट करता है। कवर्ड स्टंट हैव बीन मेनली यूज्ड टू ट्रीटमेंट फॉर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कोरोनरी परफोरेशन एंड कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म। कवर्ड स्टंट और ग्राफ्ट मटेरियल स्टंट हम तब यूज़ करते हैं जब कोई परफोरेशन हो जाए या कोई एन्यूरिज्म हो कोरोनरीज के अंदर, उसको हम बंद करने के लिए कवर्ड स्टंट यूज़ करते हैं। कवर्ड स्टंट कंपोज्ड ऑफ फैब्रिक और ग्राफ्ट मटेरियल सच एज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन PTFE मेम्ब्रेन। कवर्ड स्टंट जो है 2 बेयर मेटल स्टंट का बना हुआ होता है, जिसके बीच में हमारी PTFE मेम्ब्रेन होती है।
डिसएडवांटेज ये है कर्ड स्टेंट का, अगर हम इसको किसी बाइफर्केशन पे इन्फ्लेस कर देते हैं तो वो साइड ब्रांच का ब्लड का फ्लो जो है वो बंद कर देता है। थ्रोम्बस्टर इज़ अ थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस दैट ऑफर अ लो फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस। थ्रोम्बस को हम रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एक टेक्निक के ज़रिए, जो कि हम एस्पायरेशन कैथेटर यूज़ कर रहे होते हैं। एस्पायरेशन कैथेटर हमारे पास दो साइज़ में आ रहा होता है, 6 फ्रेंच और 7 फ्रेंच में। एस्पायरेशन कैथेटर 60 ml सिरेंज और एक्सटेंशन लाइन विद लॉक, फिल्टर बास्केट, पीरीलोड, स्टिलेट। एस्पायरेशन कैथेटर को हम कोरोनरी वायर के थ्रू थ्रम्बस जहाँ पर है, जहाँ पे टोटल आर्कुलेट आर्टरीज होती है, उसी तक लेके जाते हैं। उसमें जो प्रीलोड स्टिलेट होता है उसको निकाल के उसके साथ हम एक्सटेंशन लाइन विद जो लॉक है उसके साथ कनेक्ट करके सिरिंज के अंदर हम नेगेटिव प्रेशर बना के उसको जैसे लॉक खोलते हैं तो वो सक्शन का काम कर रही होती है, और सक्शन के ज़रिए ही उस थ्रम्बस को कैच करके वो सिरिंज के अंदर ले लेता है, और उस सिरिंज को जो हम फिल्टर बास्केट के अंदर उसको ड्रेन कर रहे होते हैं, जिससे हम उसको जो थ्रम्बस है हम वो उसको चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Mr. Imran. Any questions from the audience? Any questions? Chairpersons, you want to add something? One announcement. I would like to inform all the presenters to complete your presentation within 10 minutes, so we can complete our today's session on time. It's humbly requested to you all presenters. And now there is a tea break for 15 minutes. I would like you all to come back in 5:15. You may go now. Thank you.